Morning, you're watching the news here at CNN News 18. My name is Toya Singh. It's a Tuesday morning. Through the day, we're going to take you through all of the country's top stories as we usually do. We're going to start our day with a story set right here in the national capital. Our opening story today is a political one. The Bharatiya Janata Party has stepped up its attack against the Aam Aadmi Party in the national capital. The BJP, which remember is in power in the centre, has released a sting video on what they're calling the Liquor Gate scam. Remember, the BJP has continued to allege that the Aam Aadmi Party, which remember is in power right here in the NCR, according to the BJP, the Aam Aadmi Party both introduced a new excise policy and then took it away because they wanted to use the liquor excise policy to take money for themselves from private players. Now, the BJP has furthered this claim in the last few days. Yesterday, they released what they're calling a sting video in which they say that the modus operandi of this entire operation is revealed. In the video, apparently, it's made clear that 80% of the profit from that possible liquor scheme would have gone to Arvind Kejriwal, his Deputy Chief Minister Manish Sisodia and their friends. Meanwhile, you've had a strong response come in from the Aam Aadmi Party once again. You have the Deputy Chief Minister Manish Sisodia. He's hit back at the BJP all through yesterday. They've called the entire sting operation a joke. He's also alleged that the CBI officer who was forced to frame a case against him later committed suicide under the BJP's pressure. Today, later in the day, we're going to have reporters joining us to bring us the truth and more details about each of these allegations on both sides. The Delhi BJP MLAs will be meeting President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan today. They're demanding the dismissal of the Deputy Chief Minister. Now, we want to show you a much deeper look at all that took place yesterday. Take a look at this story. स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। Another day, another war of words over the now scrapped Delhi excise policy. Today, the BJP released what it called the Liquor Gate sting, where the father of one of the accused allegedly confesses to taking bribes. 253 करोड़ लग गया। जाओ, जिन्हें मर्जी दुकाना करो, जो मर्जी करो। The BJP claimed the sting has sealed Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia's fate. ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ। ये बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार, ये अरविंद केजरीवाल की पहचान है। Then Sisodia himself had a counter press conference and dismissed the alleged sting operation. अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो He also made a startling allegation against the CBI. ये बहुत दुखद घटना है कि सीबीआई के एक अधिकारी को, जिसको दिख रहा था कि पूरा का पूरा मामला फर्जी है, उसके ऊपर इतना दबाव बनाया गया गलत काम करने के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। The CBI raided Manish Sisodia's residence and scanned his bank locker in connection with the liquor scam. Sisodia is accused number 1 in CBI's FIR. But he and the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal claim the BJP is using agencies to target the Aam Aadmi Party because it is threatened by its rising popularity. In this now unending BJP-Aam Aadmi Party war, the next salvo is likely to be around the corner.
बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आज इस स्टिंग में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलार मनीष सिसोदिया ने किस प्रकार से मोटा माल कमाया है। और ये सारा का सारा स्टिंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे जो व्यक्ति खुद मनीष सिसोदिया जी के हाथों में पैसा पकड़ाता था। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है? मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। ये भी आज स्पष्ट हो गया कि जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता था वो शराब व्यापारियों को क्यों दिया जाता था, क्योंकि वो पीछे से घूम करके इनके पास जाना होता था। आज कच्ची कॉलोनियों के लोग क्या सोच रहे होंगे, जिनको टारगेट किया गया इस स्टिंग में आया कि कच्ची कॉलोनियों में और ज्यादा बिक सकता है शराब, बेचो जितना बेच सकते हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, जल्दी ही सिसोदिया और भ्रष्टाचारी गैंग के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। आज जब स्ट्रिंग मास्टर उनका स्ट्रिंग हो गया है तो मनीष सिसोदिया जी को प्रेस वार्ता में जवाब देते नहीं बनता है। तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी और मिलीभगत, शराब माफियाओं की मिलीभगत अब स्पष्ट हो गई है कि किस तरह से आपने दिल्ली को पीछे धकेलने का काम किया है। नशा हो, बेईमानी हो, लूट हो, इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण पूरे देश में है तो दिल्ली में मिला है। और डिप्टी सीएम ने जैसा बताया कि वो अफसर मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो झूठा आरोप केंद्र सरकार के दबाव में लगाया गया है, उस पर काम कर रहे थे और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया था कि किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे मनीष जी के ऊपर इसमें एक मजबूत केस बनाया जाए ताकि मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला जा सके और उनको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। It's a day of heavy politics today. That's the story we're going to be focusing on in the national capital. And now news from Bihar, where after dumping the NDA, the Chief Minister Nitish Kumar is on a 3-day visit to Delhi to meet the opposition leaders. You remember till a few days ago, the NDA, where you had a JDU partnership with the BJP, was in power in Bihar. A few days ago, we saw a massive switch up. You saw the Chief Minister actually switch sides and return to his old allies, the RJD and the Congress. Today, Nitish Kumar is going to be meeting Congress leader Rahul Gandhi and former Prime Minister H.D. Deve Gowda. He met him yesterday. Nitish Kumar is likely to meet the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today, Sitaram Yechury and Sharad Pawar from the NCP. According to sources, possibly Mamata Banerjee from the Trinamool Congress, Uddhav Thackeray from the Shiv Sena in Maharashtra, they've all already congratulated the Bihar Chief Minister. This move of Nitish Kumar is, remember, seen as opposition outreach. Remember, we're in the run-up to the 2024 national elections, and there are many questions over who the opposition's big face could be. It's thought that this move was made by Nitish Kumar to put himself into the running for that position. Now, we'll continue to bring you more updates, but first, take a look at political reactions to this story. नीतीश कुमार हमेशा वो इंसान हैं जो वो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। अगर उन्होंने कहा मेरी प्राइम मिनिस्टर बनने की डिजायर नहीं है, इसका मतलब उनके मन में कोई और भावना है। नीतीश कुमार की दिल्ली फेरी से एक बात बड़ी स्पष्ट होगी कि जो आज तक बात बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस भारत मुक्त होगी, भारत कांग्रेस मुक्त होगा, कांग्रेस पार्टी का कोई भारत में जगह नहीं रह जाएगी, इस बात को नीतीश भी आज मान रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस तो अब खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस का विकल्प कुछ और लोग बनेंगे या थर्ड फ्रंट बनेगा, तो कम से कम एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का खात्मा हो चुका है।
पहले तो उनकी वापसी का, घर वापसी का स्वागत तो करें हम। घर वापसी का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो सही जगह पे अब आ गए, पहुँचे, बड़ी अच्छी बात है, उनकी हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बाकी ये जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जनतांत्रिक ताकतें हैं, उन सबको कैसे जोड़ें ताकि आज के दिन देश की संवैधानिक व्यवस्था और अपनी चरित्र को हम बचा पाएँ, ताकि आने वाले दिन में एक बेहतर भारत का निर्माण हो। नेता जो हैं उनको बधाई जो है देने का काम किए हैं, तो वो तो मिलेंगे ही, सभी लोगों से मिलेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में, सबको एकजुट करना है। तो इस पे कई बार बोल चुके हैं, भाई कौन डरता है आपके धमकाने से, और आप देश में इसीलिए स्थापित हुए हैं कि सबको धमकाएं और डराएं, जनता के लिए काम नहीं करेंगे। जरा काम पे थोड़ा पूछिए तो क्या काम किया इन लोगों ने देश भर में। As we said, politics remains in focus through the day today. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is going to be meeting Prime Minister Narendra Modi today. Sheikh Hasina is on a 4-day visit to the country. She'll be discussing a wide range of issues related to security cooperation, investment, enhanced trade relations and border management. Now, two issues that are going to be in prime focus. One, the long-standing unresolved dispute over the sharing of the waters of the Teesta River. The other issue that is likely to also be in focus is that of the Rohingyas. Hasina has, in multiple interviews, made it clear that Rohingyas, according to her, seeking shelter in her country are a burden. She's also said that India might play a significant role in dealing with this issue. Now, this is Sheikh Hasina's first visit to India since 2019. As we told you, it's a 4-day visit. We'll continue to bring you updates, but this is what Hasina had to say. Take a look. For us, it's a big burden. This Rohingya, yes, on humanitarian ground, we give them shelter and providing everything. But during this COVID, we vaccinated all the Rohingya community. But how long they will stay here? So, in the camp they are staying, our environment hazard is there. Then some people engaged in drug trafficking or some arms conflict, women trafficking. Day by day it is increasing. So, as quick as they return home, it is good for our country and also for Myanmar. We are discussing with them and also the international community like ASEAN or UNO. India as a neighbor country, they can play a big role on it. All right, and moving on now from that story to a different development. Ahead of International Coast Cleanup Day on the 17th of September, beaches across the country, 75 in number, have seen a fresh drive to keep them clean. This is an effort that's been going on since early July. My colleague Arunima brings you more. This is a ground report she's bringing you from Kochi. Take a look. It is a beautiful morning at the Puthuvai beach in Kochi, fit for morning walks, building sand castles, soaking in the sun and the sea. But this group is here for something far more important. School students, veterans from defense forces, environmental activists get together every weekend or on holidays to help these beaches breathe. To remove as much plastic waste as possible and make visitors aware of the need for a clean coast. Kerala is a 589 kilometer coastal belt is in Kerala. That is spread over 9 revenue districts. So every district at that time we have to gather 200 to 300 people on that day to clean the beach. Clean the beach. This is happening in Waipin area. We have some 28 kilometers beach. So our plan is to associate every people and come together to do this mission.
group of kids here. If you can speak English or Hindi, अपनी age बताएंगे? 12. What's your age? 12. You're also 12. 14. Usually जब बच्चे सी बीच पे आते हैं तो समुंदर में सीधे घुस जाते हैं, सैंड कैसल बनाते हैं, पानी से खेलते हैं. आप लोग यहाँ कूड़ा उठा रहे हैं. मतलब कैसे ये आइडिया आया? We saw the place and saw the garbage lying around. We wanted to clean the area and keep it swachh. We would like to aware all the people that all of you you say that when they eat chips or anything like the plastic are disposed, they didn't dispose and throw it. May talk to them and don't throw the waste and it's harmful, and at that time they realize, oh sorry, yeah. वो विदेश में जो उधर का गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन वो सुबह आएगा, वो सब कलेक्ट करेगा, वो इधर उधर नहीं फेंकता है. उधर हम लोग का वो ऐसा करने का एक वेस्ट बॉक्स है तो भी उसमें डालने का एक प्रोसेस नहीं है. Not just Kochi, you might see similar scenes across beaches in Thiruvananthapuram, Kasaragod, Mangaluru, Udupi, Digha, Haldia and many other places. To commemorate International Coastal Cleanup Day, on the 17th of September, the centre has launched a campaign to raise awareness and clean up the coast. The 75-day-long campaign, in sync with celebrations of the 75th year of independence, was launched on the 5th of July. The motive is to make people aware that the empty packet of chips you leave behind on the beach could land on your table in a different avatar. Basically, it is a litter-free sea. That is the basic idea. So, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, he has a vision of clean sea, clean coast, and clean sea. Swachh Sagar, Surakshit Sagar. 7,500 kilometer long coastline, 24 states, 5,200 volunteers and a target of removing 1,500 tons of garbage. That's the mission with which the ministry, the government of India, the volunteers across these states have all started with. Within the first 20 days of this campaign, about 200 tons of garbage was already removed, and that has encouraged the volunteers much more. The message that they're giving is this is not a one-time exercise. It is not one time or for 1 month or 3 months that you should ensure garbage-free beaches. This should be a lifelong campaign because what you throw in the sea ultimately comes back to your plate. With Ravinder Kumar in Kochi, this is Arunima.